केबल के लिए भी हमने दरखास्त की, लेकिन नहीं हुआ। मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है। ओल्ड सिटी में 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज। Legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the government, previous government, why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those years? 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, आई विल मेंशन ऑन द 10 years अचीवमेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन ओल्ड सिटी we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say? आपको जरा अकल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. it takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government, and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। बोले आप कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, ये भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं है? I request my learned friend Akbaruddin owaisi साहब, you know, हमारा जो MLA साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No. Ek minute. No, he didn't say fail. owaisi sahab. owaisi sahab, please. You know, if any member diverts, sir,
gets diverted. Basically, you know, it's only all the emotional issues which comes into being. So our member was just asking and questioning the TRS government, which they didn't do it. This is his context and this is his objective. It would have gone in, it would have taken in a wrong way. And I would like to request Honorable Speaker to expunge the words what Akbaruddin owaisi has said about the new member. About the new member, like akal ka kuch aisa. नहीं, ठीक है भाई. नहीं, I'm not, we are not here. We are here on a positive note. Sir, what? Please. Sir, my point here is, you know, he has seen many assemblies. No, that's fine. You know, we take everything in a very positive way. खबरदार in Urdu बोले तो खबर बोले तो news information. खबरदार is nothing which is unparliamentary. KTR garu, please. Sir, Sir, you know, whatever you please examine the record, sir. Please examine the records. Whatever is unparliamentary, you can expunge it, sir.